Hi everyone. Today we are starting with Forms of Public Sector Enterprises, Chapter 3, Business Studies Plus 1, and we are going to talk about departmental undertaking. So, if you've traveled in train, we are talking about departmental undertaking. If you've heard All India Radio, Doordarshan or anything, you're talking about broadcasting, Department of Broadcasting, and if you've talked about telegraph and postal and telegraph, you're talking about Ministry of Communication. Now all these things come under departmental undertaking. What's the departmental undertaking? It's the most oldest and traditional form of public sector enterprise. रिमेंबर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेरशाह सूरी एंड हिज डाक पोनीज. हम वो चिट्ठियाँ डिलीवर करने का टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं. सो दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज. दीज एंटरप्राइज एस्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री जिसके साथ ये हैं. They are considered as part or extension of the ministry. Why? Because the concerned ministry takes care of everything. Like for example, in case of railways, all annual budget is it comes through the funds for the railways come from the annual budget of the ministry, as well as recruitment is under central government and ministry decides everything which is to be done. They have not been constituted as autonomous institution. They are totally dependent on the ministry, the central government. They act through the officials of the government. Of course, through government everything is done. The employees are also central government employees, so they are the government employees and they may be under central state or central government or state government, either of it. Now these are not the features, but this is an introduction. So in case if you get the definition for departmental undertaking, you're going to write these enterprises are established as departments of ministry and are considered as part or extension of ministry and have not been constituted as autonomous institution. So these 3 points actually constitute of your definition. So if in case if you have to write definition, you can write from here till the 3rd point. And why this point has been given? Because usually a case study or 1 mark question or MCQ comes on this. That's why I have mentioned this as well as these 2 points. So next we start with features. Funding, audit, recruitment, control, accountable. These are the features. Starting with funding. पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी से. एनुअल बजट से एलोकेट होता है, वापस कहाँ जाता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी को. सो कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी. इट इज़ एन एनुअल एप्रोप्रिएशन ऑफ बजट. रेवेन्यू जो है वापस का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमने जो कमाया, रेवेन्यू इज पेड इनटू द ट्रेजरी. ऑडिट क्या है? दीज अंडरटेकिंग्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट एंड अकाउंटिंग एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़. जैसे बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, वैसे ही इनके अकाउंट्स ऑडिट किए जाते हैं. नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट. The employees of the enterprise are government servants and they are headed by IS officers and civil servants. Recruitment conditions are same as that of a government employee. So when you talk about recruitment of the when you talk in terms of recruitment of departmental undertaking, क्या होता है? जो कई बार IS officers होते हैं जिनको हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन लोगों को यहाँ पर लाया जाता है. So once maybe sometimes after they retire or while they are still working, these people head the departmental undertakings. So many times if you must have heard the railway ministers के बारे में बात करें या post and telegraph के बारे में बात करें या all India radio, तो railway ministers are not retired IS officers. We are not talking about them. But yes, those who are in charge of the railways. Now they have their own recruitment board also, railway recruitment board, but that is for the other level of employees. So when you're talking about heading of the railway organization or railway department or the various zones, it is done by the IS officers. Now the employees of the enterprise are government servants, so they are just simply government servants. They are headed by the IS officers and civil servants. Recruitment conditions are same as that of a government employee. So government organization की तरह ही same इनके recruitment conditions होती है. कंट्रोल, इट इज़ अ मेजर सब डिविजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो कौन इसको कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी. सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. ऑफ कोर्स ये सब डिविजन है उनकी. देन अकाउंटेबल. दीज एंटरप्राइज आर डायरेक्टली आंसरेबल टू द मिनिस्ट्री. देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री. ऑफ कोर्स यस. अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल. तो जब हम बात करते हैं कि ये किसको आंसरेबल होते हैं, मैंने कल भी प्रीवियस वीडियो में भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो रेलवे मिनिस्टर को आंसरेबल होना पड़ता है. जब भी कोई प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स आंसरेबल होते हैं टू जनरल पब्लिक. वाई? बिकॉज दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग.
They may not be directly responsible, but they are concerned about. They have to show their concern, so they are answerable. एग्जाम्पल्स क्या है इनके, मैंने बहुत बारी बता दिया. रेलवे विच कम्स अंडर रेलवे मिनिस्ट्री, पोस्ट एंड टेलीग्राफ विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल इंडिया रेडियो विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. Right. So we're done with introduction and features. Now we'll start with merits and demerits. So we start with the merits and demerits, that is limitation of departmental undertaking. The first and foremost is control. So who takes over the control? The departmental undertaking facilitate the parliament to exercise effective control over their operations. So all control lies in the hands of the parliament. Why? Because again these are under the concerned ministry. First point, accountability. Accountability matlab answerability. The departmental undertaking ensure a high degree of public answerability. Why? They are answerable to the general public because they are the ministers. Actually the ministers who have been chosen by the general public are answerable to them. So even the concerned ministry, they are answerable to, and the ministry is answerable to the general public. रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में अर्न किया जाता है वो रेवेन्यू कहाँ जाता है? वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में वापस जाता है, क्योंकि फंड्स कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आते हैं. द रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी. इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. अनडाउटली इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. Now, when we talk about the security, it is said that where national security is concerned, this form is most suitable. तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि where is departmental undertaking suitable, तो suitability के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, so you can always say where national security is concerned. It is under the direct control and supervision of the concerned ministry. Yes, and nobody would like to take, the government in power would never like to take any risk in concern of for the concern of the public, general public. उनके concern के लिए वो हमेशा काम करेंगे, उनके against कभी भी नहीं जाएंगे. Limitation. सबसे पहले inflexible. Departmental undertaking क्यों inflexible होती है? Because they fail to provide flexibility which is essential for smooth operation of the business. क्यों फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? गवर्नमेंट हमेशा इंटरफेयर करती रहती है. सो अगर कोई आपके काम में हमेशा इंटरफेयर करता रहेगा, आपको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी? इफेक्ट हो जाएगी. सो that's why it is inflexible. So it failed to provide flexibility. Ignore consumer needs. अगर आप रेलवेज की बात करें तो कितनी कंज्यूमर नीड्स आपको पता है केटर होती है? इवन शताब्दी कितनी कंज्यूमर नीड्स केटर करता है? यू पीपल ऑल्सो नो इट. वी ऑल नो इट. वी ट्रैवल्ड इन वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्स, राजधानी, दुरंतो, ऑल दीज ट्रेन्स. डू दे एक्चुअली टेक केयर ऑफ कंज्यूमर नीड्स? If you want to talk about consumer needs, I traveled to Germany, and the trains I traveled by, you will not believe the kind of system they have, starting from buying of the tickets in case there is a delay, or where the timetable which is to be displayed, the kind of food available there, everything is properly taken care of. It is unlike that in India. So if a train is delayed and if train comes late, the proper announcement will be made. You will not be able to just simply, the train is delayed, it is delayed for 5 hours, 6 hours. It doesn't happen like that in any other place. Europe I travel, it doesn't happen like that. हमारे यहाँ ट्रेन डिले है तो 1-1 घंटे 5-5 घंटे के लिए डिले है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी टिकट कैंसिल नहीं होगी. सो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर नीड्स में आती हैं, राइट. These organizations are insensitive to consumer needs. Also, services get affected due to this nature. सारी services affected होती हैं. Of course, yes, that's why people have stopped traveling by train. Even if they travel by plane, हमारे यहाँ सारा कुछ ही system एक जैसा है. Delay in decision making. The heads of department undertaking are not allowed to take independent decisions without approval of the concerned ministry. So decision क्या है? Delay. हर चीज़ किससे पूछनी है? मिनिस्टर से पूछनी है. चाहे जो भी रेलवेज का है तो रेलवे मिनिस्टर से पूछनी है, कम्युनिकेशन का है तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर से पूछनी है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से पूछनी है. जब सब चीज़ पूछ के ही करनी है तो आपके पास कहाँ पर इतनी ज़्यादा वो होगी, फ्रीडम होगी टू टेक एक्शन. तो इट लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग. नॉट एप्ट फॉर रिस्की वेंचर्स. ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्की वेंचर्स. जो काम चलता आ रहा है बस वही करते हैं. वो कहते हैं हम क्यों रिस्क लें भाई, हमारी सैलरी आ रही है हर महीने, हमें क्यों कोई चीज़ की एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए. So the departmental taking are unable to take advantage of business opportunities. The bureaucrats are over cautious and they are conservative. They do not allow the risky ventures. They are not allowed also, and they don't allow themselves also. किसी और को भी allow नहीं करते. क्यों करे भाई?
गवर्नमेंट सैलरी आ रही है पर मंथ, रिस्की वेंचर लेकर अपने ऊपर कोई क्यों पैर को, लिटरली इट इज़ लाइक दैट कि आप अपना पैर कुल्हाड़ी पे रख रहे हो, कुल्हाड़ी पे पैर नहीं आ गया है, सो दैट्स लाइक दैट। रेड टेपिज्म, चाहे जो मर्जी आए हो जाए, चीज़ें प्रोटोकॉल में होंगी, एक सिस्टमाइज सिंक में होंगी, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। देयर इज अ रेड टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशन, नो एक्शंस कैन बी टेकन इन प्रॉपर if a proper channel is not followed. So there is a proper scalar chain, hierarchy, there is a proper protocol, you cannot break the protocol, चाहे urgency है, चाहे कुछ है, nothing will be considered, it's totally red tapeism. लास्ट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जहाँ पर गवर्नमेंट है, जहाँ पर मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट भी है, मिनिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, 100% होगी. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री. ऑफ कोर्स इस मिनिस्टर्स दे इंटरफेयर इन एवरीथिंग वॉट एवर वी ट्राई टू डू. So we finish off at departmental undertaking. Next we are going to start with is statutory corporation. Till then, enjoy yourself and I hope this departmental undertaking concept is clear to you. Bye bye.